हो. जय गुरु. जय गुरु. बापरे. हा, दिसतंय का? ऐकू येतंय? जय गुरु. नाही, हा. दिसत नाहीये सर. जय गुरु सर, दिसत नाहीये. शेअर नाही केलंय का मी? केलंय, नाही, दिसेल. शेअरिंग केलंय तुम्ही, पण ते दिसत नाहीये अजूनही. स्टार्टेड स्क्रीन शेअरिंग म्हणते पण दिसत नाहीये. बघा, आलं नाही अजून. हो, आलं. हं. आता आलं सर. चला, पहिले 10 श्लोक कोण देवी म्हणतेस ना, म्हण. हो सर. हा. अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलध्रुवं संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतर कसं म्हणायचं, क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेचितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुरु कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हा, छान. पुढचं कोण म्हणतंय? पुढचा 10 श्लोक मी कोण म्हणू का? म्हणताय? हा, म्हणा. हा. राजेश. अथैदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतौ व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्
भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हा ओम छान कृष्णार्पणस्तु। छान 15वा अध्याय पहिले 10 श्लोक कोण म्हणताय? मी म्हणू का सर? हा म्हणिरा. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके लहानच आहे ते, न रूप 10-12 वर्षाचे ते. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितं ये यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययन्तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरे यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अदृष्टाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हा छान. पुढचं कोण म्हणताय 11व्यापासून? मी म्हणू का शुभांगी? हा म्हणा. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हा तर आपण जसं मी म्हटलं होतं की आज आपण गणेश चतुर्थी आहे, तर आपण आज गणेश सहस्रनाम याचा पाठ करूया. बहुतेक तुमच्यापैकी बहुतेक जणांचा असा पाठ असा कधी वेळ आली नसेल हे म्हणायची, त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी ते ऐका, ज्यांना म्हणणं शक्य नाही त्यांनी, आणि ज्यांना म्हणायला येतं त्यांना आपण 20-20 श्लोक असे आपण म्हणूया. तर मी ते शेअर करतोय स्क्रीन. मी सुरुवात करतो आधी. अथ श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्रम्. श्री गुरु गणेशाय नमः. व्यास उवाच कथं नाम्नां सहस्रनामं गणेश उपदिष्टवान् शिवायै तन्ममाचक्ष्व लोकानुग्रह तत्पर. ब्रह्मोवाच देव एवं पुरारातिः पुरत्रयजयोद्यमे अनर्चनाद् गणेशस्य जातो विघ्नाकुलः किल. मनसा स विनिर्धार्य ततस्तद्विघ्नकारणं महागणपतिं भक्त्या समभ्यर्च्य यथाविधि विघ्नप्रशमनोपायमपृच्छदपराजितः सन्तुष्टः पूजया शम्भोर्महागणपतिः स्वयं सर्वविघ्नैकहरणं सर्वकामफलप्रदं. ततस्तस्मै स्वकं नाम्नां सहस्रमिदमब्रवीत्. तशी याची कथा आहे, थोडक्यात सांगतो मी, की साक्षात शिवाला सुद्धा तो जेव्हा तारकासुराशी युद्ध करत होता भगवान शंकर, तेव्हा त्यांना प्राप्ती म्हणजे विजय मिळेना. आणि तो विजय म्हणजे असा रूपकात्मक आहे की अज्ञानावरती म्हणजे विजय प्राप्त होत नव्हता. तर का बरं? तर मग महागणपतीला त्यांनी विचार म्हणजे त्याचं हे करून स्मरण करून त्याला उपाय विचारला. तर त्यांनी गणपतींनी त्यांना हे विघ्नहरण करण्यासाठी म्हणजे ज्ञानप्राप्तीसाठी ही 1000 नावं सांगितली स्वतः महागणपतींनी. तर ही महागणपतीची नावं आपण म्हणणार आहोत. ओमस्य श्री महागणपती सहस्रनाम स्तोत्रमाला मंत्रस्य श्री महागणपती ऋषये नमः. शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः. मुखे श्री महागणपती देवताये नमः. हृदये गं बीजाय नमः. गुह्ये हुं शक्तये नमः. पादयोः स्वाहा. कीलकाय नमः. नाभौ श्री महागणपती प्रसाद सिद्ध्यर्थे श्री गुरोराज्ञया श्री महागणपती सहस्रनाम स्तोत्रमाला मंत्रस्य श्री महागणपती पूजांगत्वेन पाठे विनियोगाय नमः. कृतांजलिः. ओम गाम अंगुष्ठाभ्याम नमः. हृदयाय नमः. श्रीं गीं तर्जनीभ्यां नमः. शिरसे स्वाहा. ओम गूं मध्यमाभ्यां नमः. शिखाय वषट्. ओम गैं अनामिकाभ्यां नमः. कवचाय हुम्. ओम गैं कनिष्ठिकाभ्यां नमः. नेत्रत्रयाय वषट्. ओम गः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः. अस्त्राय फट्. ध्यानम्. पंचवक्त्रो दशभुजो बालचन्द्रस्य चिप्रभा मुण्डमालः सर्पभूषो मुकुटाङ्गदभूषण अग्न्यर्कशशिनो भावे स्थिरस्कुर्वन् दशाविधः. मानसपूजा लं पृथिव्यात्मकं श्री महागणपति देवताय नमः. गंधं कल्पयामि नमः. हम आकाशात्मकं श्री महागणपति देवताय नमः. पुष्पं कल्पयामि नमः. यं वायात्मकं श्री महागणपति देवताय नमः. धूपं कल्पयामि नमः. रं तेजसात्मकं श्री महागणपति देवताय नमः. दीपं कल्पयामि नमः. वम अमृतात्मकं श्री महागणपति देवताय नमः. अमृत नैवेद्यं कल्पयामि नमः. सं सर्वशक्ति प्रकृत्यात्मकं श्री महागणपति देवताय नमः. सर्वोपचारान् राजोपचारान् दिव्योपचारान् कल्पयामि नमः. श्री महागणपति देवताय नमः. अनंत कोटि नमस्कारान् कल्पयामि नमः. तर अशा रीतीने आपला हा जो उपक्रम आहे की आपण गीता ज्ञान प्राप्ती करण्याचा प्रयत्न करतोय, तर त्या ज्ञानाच्या प्राप्तीमध्ये आपल्याला काही विघ्न येऊ नये आणि ती ज्ञानप्राप्ती व्हावी म्हणून आपण महागणपतीचा हा सहस्रनाम स्तोत्र
पठण श्रवण करणार. मी पहिले 10 श्लोक म्हणेल, मग नंतर 20-20 श्लोक एकेकाने ज्यांना येतील त्यांनी सांगा कोण म्हणतं ते, मी म्हणेल. श्री महागणपतिरुवाच. ओम गणेश्वरो गणक्रीडो गणनाथो गणाधिपः एकदंष्ट्रो वक्रतुंडो गजवक्त्रो महोदरा लंबोदरो धूम्रवर्णो विकटो विघ्ननायकः सुमुखो दुर्मुखो बुद्धो विघ्नराजो गजाननः भीमप्रमोदामोदः सुरानन्दो मदोत्कटः हेरम्बः शम्बरः शम्भुर्लम्बकर्णो महाबलः नन्दनो लम्पटो भीरुर्मेघनादो गणञ्जयः विनायको विरूपाक्षो धीरशूरो वरप्रदः महागणपतिर्बुद्धिप्रियक्षिप्रप्रसादनः रुद्रप्रियो गणाध्यक्ष उमापुत्रो घनाशनः कुमारगुरुरीशान पुत्रो मूषकवाहनः सिद्धिप्रियः सिद्धिपतिः सिद्धः सिद्धिविनायकः अविघ्नस्तुम्बरुः सिंहवाहनो मोहिनीप्रियः कटङ्कटो राजपुत्रः शालकः संमितोमितः कूष्माण्डः सामसम्भूतिर्दुर्जयो धूर्जयो जयः भूपतिर्भुवनपतिर्भूतानां पतिरव्ययः विश्वकर्ता विश्वमुखो विश्वरूपो निधिर्गृणी कविः कवीनां वृषभो ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतिः ज्येष्ठराजो निधिपतिर्निधिप्रियपतिप्रियः हिरण्मयपुरान्तस्थः सूर्यमण्डलमध्यगः. पुढचे 20 श्लोक कोण म्हणते? म्हणू का मी मी म्हणते गुरुजी? सर. हा, आदित्य म्हण, शांतपणे म्हण. हा. कराहतिध्वस्त सन्धुत सलीलः पोषदन्तभेत् उमाङ्ककेलि कुतुकी मुक्तिदः कुलपालनः किरीटी कुण्डली हारी मनमाली मनोमयः वैमुख्यः तदत्य श्रीः पादाहति चितक्षतः सद्यो जातस्वर्णमुञ्ज मेखली दुर्निमित्तहृत् दुःस्वप्नहृत्प्रसहनो गुणीनादप्रतिष्ठितः सुरूपः सर्वनेत्राधिवासो वीरासनाश्रयः पीताम्बरः खण्डरदः खण्डेन्दुकृतशेखरः चित्राङ्कश्यामदशनो भालचन्द्रश्चतुर्भुजः योगातिपस्तारकस्तः पूरुषो गजकर्णकः गणाधिराजो विजयस्थिरो गजपदध्वजी देवदेव स्मरप्राण दीपको वायुकीलकः विपश्चिद्वरदो नादोन्नादभिन्नबलाहकः वराहर्दनो मृत्युञ्जयो व्याघ्राजिनाम्बरः इच्छाशक्तिधरो देवत्राता दैत्यविमर्दनः शम्भुवक्त्रोद्भवः शम्भुकोपः शम्भुहास्यभूः शम्भुतेजः शिवाशोकहारी गौरी सुखावहः उमाङ्गमरजो गौरी तेजोः स्वर्धनुर्भवः यज्ञकायो महानादो गिरिवर्ष्माशुभाननः सर्वात्मा सर्वदेवात्मा ब्रह्ममूर्धा ककुप्श्रुतिः ब्रह्माण्डकुम्भश्चिद्व्योम भालः सत्यशिरोरुहः जगज्जन्मलयोन्मेषोऽग्निर्कसोदृक् गिरीन्द्रैकरदो धर्मा धर्मोष्ठः सामब्रूहितः ग्रहर्क्षदशनो वाणी जुहो वासवनासिकः कुलाचनांसः घण्टो रुद्रशिरोधरः नदीनदभुजः सर्पाङ्गुलीकस्तारकारकः भ्रूमध्यसंस्थितकरो ब्रह्मविद्यामदोत्कटः व्योमनाभिश्रीहृदयो मेरुपृष्ठोर्णवोदरः कुक्षिस्थयक्षगन्धर्व रक्षः किन्नरमानुषः पृथ्वीकटिसृष्टिलिङ्गः शैलोरुर्दस्रशानुकः पातालजङ्घो मुनिपात् कालाङ्गुष्ठस्त्रयितनुः ज्योतिर्मण्डललाङ्गूलो हृदयालाननिश्चरः हृत्पद्मकर्णिकाशाली वियत्केलिसरोवरः सद्भक्तध्याननिगडः पूजावारी निवारितः प्रतापी कश्यपसुतो गणपो विष्टपी बली यशस्वी धार्मिकस्वोचाः प्रथमेश्वरः चिन्तामणिद्वीपपतेः कल्पद्रुमवनालयः रत्नमण्डपमध्यस्थो रत्नसिंहासनाश्रयः तीव्राशुरोद्धृतपदो ज्वालिनीमौलिलालितः नन्दानन्दितपीठश्रीर्भोगदाभूषितासनः. जय गुरु. कोण म्हणते आता पुढचं? अभय. मी म्हणू का सर? हा, सुखदा म्हण. सकामदायिनी पीठस्फुरदुग्रासनाश्रयः तेजोवती शिरोरत्नं सत्या नित्यावतंसितः सविघ्ननाशिनी पीठः सर्वशक्त्यम्बुजाश्रयः लिपिपद्मासनाधारो वह्निकामत्रयाश्रयः उन्नतप्रपदो गूढगुल्फसंवृतपार्ष्णिकः पीनजङ्गश्लिष्टजानु स्थूलोरुक्रोन्नमत्कटिः निम्ननाभिः स्थूलकुक्षी पीनवक्षा बृहद्भुजः
पीनस्कन्दकम्बुकण्ठो लम्बोष्ठो लम्बनासिकः भग्नवामरदस्तुङ्ग सौर्यदन्तो महाहनुः ह्रस्वनेत्रत्रयशूर्प कर्णो निबिडमस्तकः स्तबकाकारकुम्भाग्रो रत्नमौलिर्निरङ्कुशः सर्पहारकटीसूत्र सर्पयज्ञोपवीतवान् सर्पकोटीरकटकः सर्पगैवेयकाङ्गदः सर्पकक्षोदराबन्ध सर्पराजोत्तरीयकः रक्तो रक्ताम्बरधरो रक्तमाल्यविभूषणः रक्तेक्षणो रक्तकरो रक्तताल्वोष्ठपल्लवः श्वेतश्वेताम्बरधर श्वेतमाल्यविभूषणः श्वेतातपत्ररुचिर श्वेतचामरवीजितः सर्वावयवसम्पूर्ण सर्वलक्षणलक्षितः सर्वाभरणशोभाढ्य सर्वशोभासमन्वितः सर्वमङ्गलमाङ्गल्य सर्वकारणकारणं सर्वदैककरशाङ्गी बीजापुरी गदाधरः इक्षुचापधरः शूली चक्रपाणी सरोजभृत् पाशीधृतोत्पलशाली मञ्जिरीभृत्स्वदन्तभृत् कल्पवल्लीधरो विश्वाभयदैककरो वशी अक्षमालाधरो ज्ञान मुद्रावान् मुद्गरायुधः पूर्णपात्री कम्बुधरो विद्रुतादि समुद्गकः मातुलिङ्गधरश्च्युत कलिकाभृत्कुठारवान् पुष्करस्थस्वर्णघटी पूर्णरत्नाभिवर्षकः भारती सुन्दरी नाथो विनायकरतिप्रियः महालक्ष्मी प्रियतमः सिद्धलक्ष्मी मनोरमः रमा रमेश पूर्वाङ्गो दक्षिणो मामहेश्वरः महीवराह वामाङ्गो रतिकन्दर्प पश्चिमः आमोदमोदचनन सप्रमोद प्रमोदनः समेधित समृद्ध श्री वृद्धि सिद्धि प्रवर्तकः दत्त सौमुख्य सुमुख कांति कंदलिताश्रयः वदनावत्याश्रिताङ्घ्री कृत्त दौर्मुख्य दुर्मुखः विघ्न संपल्लवोपघ्न सेवोन्नीत्रमदद्रवः विघ्नकृनिघ्न चरणो द्राविणी शक्ति सत्कृतः तीव्रा प्रसन्न नयनो ज्वालिनी पालितैकदृक् पुढचं म्हणू कसं कोण म्हणतंय पुढचं? जय गुरु हम्म. आम्ही म्हणतो हा बर. मोहिनी मोहनो भोग दायिनी कांतिमंडितः कामिनी कांतवक्तश्री हृदिष्टरो सुंदरः वसुंधरा मनोज्ञ महाशंख निधि प्रभु न मद्मसमोति मौली महापद्म निधि प्रभु सर्वसद्गुरु संसेव्य सुशिष्केश रुद्राश्रयः ईशानमूर्धा देवेंद्र शिखा पवन नंदनः अग्रप्रत्यग्र नयनो दिव्याशाणा प्रयोगवित् ऐरावतादि सर्वाशा वारणा वर्ण वज्रादश परिवारो गणचंड समाश्रयः जया जय परिवारो विजया विजयावह अजितार्जित पादाब्जो नित्यानितावतंसितः विलासिनी कृतोल्लास सौंडी सौंदर्य मंडितः अनंतानंत सुगद सुमंगल सुमंगलः इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति निषेवितः सुभगा संस्थित बदव ललिता ललिताश्रयः कामनी कामन काम मालिनी केलिलालितः सरसत्याश्रयो गौरी नंदन श्रीनिकेतनः गुरुगुप्त पदवाचा सिद्धो वागीश्वरीपतिः नलिनी वामा रामो ज्येष्ठा मनोरमः रौद्री मुदित पादाब्जो हुंबीजस्तुंग शक्तिकः विश्वाजिजनत्राण स्वाहा शक्ति सकीलकः अमृताब्धि कृतावासो मदखूर्णीतलोचनः उच्छिष्टुच्छिष्ट गणेशो गणनायकः सार्वकालिक संसिद्धिर्नृत्यशिवो दिगंबरः अनपायोऽनंत दृष्टिरप्रमेयो जरामरः अनाविलतो प्रतिरतो रचितो अमृतमक्षरम् अप्रतर्क्योक्षो नाधारो नामयोमलः अमोघ सिद्धिरद्वैत मघोरो प्रमित्ताननः अनाकारोब्धि भूम्यग्नि बलग्नो व्यक्तलक्षणः आधारिपीठ आधार आधाराधेयवर्जितः आकुकेतन आशाकूरकाकु महार्तः इक्षुसागर मध्यस्थ इक्षुभक्षण लालसः इक्षुचापातिरेकस्य इक्षुचाप निषेवितः इंद्रगोपसमानस्य इंद्रनीलस्मद्दितिः इंदीवर्दलश्याम इंदुमण्डल निर्मलः इद्मप्रीडाभाग ईराधामेन्द्रियाप्रियः इक्ष्वाकु विध्वंसी इति कर्तव्ये तेप्सितः ईशानमौलिरीशान ईशान सुत इत्यः ईशनात्रय कल्पांत इहा मात्र विवर्जितः उपेंद्र उडुभ्रन्मौली रुंडेल कबलिप्रियः. लीना म्हणते लीना. ठीक आहे मी म्हणतो.
उन्नतानन उत्तुंग उदार त्रिदशाग्रणीः ऊर्जस्वानुष्मलमद ऊहापोह दुरासदः ऋग्यजः सामसम्भूतिर्ऋद्धिसिद्धिप्रदायकः ऋजुचित्तैकसुलभो ऋणत्रयविमोचकः लुप्तविघ्नस्वक्तानां लुप्तशक्तिः लुप्तश्रीर्विमुखार्चानां लूताविस्फोटनाशनः एकारपीठमध्यस्थ एकपादकृतासनः एजिताखिलदैत्यश्रीरेदिताखिलसंश्रयः ऐश्वर्यनिधिरैश्वर्यमहिकामुष्मिकप्रदः ऐरम्मदसमोन्मेष ऐरावतनिभाननः ओङ्कारवाच्य ओङ्कार ओजस्वानौषधीपतिः औदार्यनिधिरौद्धत्य दुर्यौन्नत्यनिःस्वनः अंकुशः सुरनागानाम् अंकुशः सुरविद्विषाम् अस्समस्तविसर्गान्तपदेषु परिकीर्तितः कमण्डलुधरः कल्प कपर्दी कलभाननः कर्मसाक्षी कर्मकर्ता कर्मा कर्मफलप्रदः कदम्बमूलकाकारः कूष्माण्डगणनायकः कारुण्यदेहः कपिलः कथकः कटिसूत्रभृत् खर्वखड्गप्रियः खड्ग खान्तान्तस्थः निर्मलः खल्वाटशृङ्गनिलयः खट्वाङ्गी खदुरासदः गुणाढ्यो गहनोगस्थो गद्यपद्यसुधारणः गद्यगानप्रियो गर्जो गीतगीर्वाणपूर्वजः गुह्याचाररतो गुह्यो गुह्यागमनिरूपितः गुहाशयो गुहाब्धिस्थो गुरुगम्यो गुरोर्गुरुः घण्टागर्गरिकामाली घटकुम्भो घटोदरः चण्डश्चण्डेश्वरसुरश्चण्डीशश्चण्डविक्रमः चराचरपतिश्चिन्तामणिचर्वणलालसः छन्दश्छन्दोपुष्छन्दो दुर्लक्षश्छन्दविग्रह जगद्यो निर्जगत्साक्षी जगदीशो जगन्मयः जपो जपपरो जप्यो जिह्वा सिंहासनः प्रभुः झलज्झलोल्लसद्दानो झङ्कारि भ्रमराकुलः टङ्कारस्फारसंरावष्टङ्कारि मणिनूपुरः फद्वै पल्लवान्तस्तः सर्वमन्त्रैकसिद्धिदा दिण्डिमुण्डोडाकिनीशो डामरो डिण्डिमप्रियः धक्कानिनादमुदितो ढौकोडुण्डिविनायकः तत्त्वानां परमं तत्त्वं तत्त्वं पदनिरूपितः तारकान्तरसंस्थानस्तारकस्तारकान्तकः स्थाणुस्थाणुप्रियस्थाता स्थावरं जङ्गमञ्जगत् दक्षयज्ञप्रमथनो दाता दानवमोहनः दयावान् दिव्यविभवो दण्डवृद्दण्डनायकः. कोण म्हणते? आदित्य म्हण. दन्तप्रभिन्नाप्रभारो दैत्यवारणधारणः दंष्ट्रालब्धद्विपकटो देवार्थदृगजाकृतिः धनधान्यपतिर्धन्यो धनदो धरणीधरः दानैकप्रकटो ध्येयो ध्यानं ध्यानपरायणः नन्द्यो नन्दिप्रियो नादो नादिमध्यप्रतिष्ठितः निष्कुलो निर्मलो नित्यो नित्यानित्यो निरामयः परं व्योम परं धाम परमात्मा परं पदं परात्परः पशुपतिः पशुपाश्वमोचकः पूर्णानन्दः परानन्दः पुराणपुरुषोत्तमः पद्मप्रसन्ननयनः प्रणताज्ञानमोचनः प्रमाणप्रत्ययातीतः प्रणतार्तिनिवारणः फलहस्तः फणिपतिः फेत्कारः फाणितप्रियः बाणार्चिताङ्घ्रियुगलो बालकेलिकुतूहली ब्रह्मार्चितपदो ब्रह्मचारी बृहस्पतिः बृहत्तमो ब्रह्मपरो ब्रह्मण्यो ब्रह्मवित्प्रियः बृहन्नादाग्रचीत्कारो ब्रह्माण्डावलिमेखलः भ्रूक्षेपदत्तलक्ष्मीको भर्गो भद्रो भयापहः भगवान् भक्तिसुलभो भूतिदो भूतिभूषणः भव्यो भूतालयो भोगदाता भ्रूमध्यगोचरः मन्त्रो मन्त्रपतिर्मन्त्री मदमत्तमनोरमः मेखलावान् मन्दगतिर्मतिमत्कमलेक्षणः महाबलो महावीर्यो महाप्राणो महामनाः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञ गोप्ता यज्ञफलप्रदः यशस्करो योगगम्यो याज्ञिको याजकप्रियः रसो रसप्रियो रस्यो रञ्जको रावणार्चितः रक्षो रक्षाकरो रत्नगर्भो राज्यसुखप्रदः लक्षं लक्षप्रदो लक्षो लहस्थो लट्टुकप्रियः लालप्रियो लास्यपरो लाभकुरुल्लोकविश्रुतः वरण्यो वह्निवदनो वन्द्यो वेदान्तगोचरः विकर्ता विश्वतश्चक्षुर्विधाता विश्वतो मुखः वामदेवो विश्वनेता वज्रनिवारणः विश्वबन्धनविष्कम्भाधारो विश्वेश्वरप्रभुः शब्दब्रह्मशमप्राप्य शम्भुशक्तिगणेश्वरः शास्ताशिखाग्रनिलयः शरण्यशिखरीश्वरः षड्ऋतो कृष्णस्रग्वेषणाधारः षडक्षरः संसारविद्यः सर्वज्ञः सर्वभेषजभेषजम् सृष्टिस्थितिलयक्रीडः सुरकुञ्जरभेदनः सिन्दूरितमहाकुम्भः सदसद्व्यक्तिदायकः साक्षी समुद्रमथनः स्वसंवेद्य स्वदक्षिणः स्वतन्त्रः सत्यसङ्कल्पः सामगानर्तः सुखी. सुखदा. मी म्हणू का? हा सर. शशी आत्या म्हण तू. चालेल. काय म्हणताय? खबर. नंतर मी म्हणते. दक्षिणा
स्वतंत्र सत्य संकल्प सामग अनर्थ सुखी हंस शिष्याची हवन हवत बभूत हव्य प्रिय हर्ष उल्लेखा मंत्र मध्ये का क्षेत्राधिपक क्षमा भरता क्षमा परपरायणम क्षिप्रक्षेम करक्षेमानंद क्षोणुसरद्रुमा धर्मप्रद सद दाता सौभाग्यवर्धना विद्याप्रदो विपदो भुक्ती प्रदा अभिरूप्य करो वीर श्री पदो जयप्रदा सर्ववश्य करो गर्भ दोषा पुत्रवोतुला वेदाद कीर्तद शोक हरि दौर्भाग्य नाशना प्रतिवादिमुख स्तंभ रुष्ट चित्त प्रसादना पराभिचार शमनो दुःख भंजन कारका लवसृष्टी कला काष्टा निमिष तत्परक्षणा घटी मुहूर्तं प्रहरो दिवानक्तम अनिशम पक्षमासो येनं वर्षं युगं कल्पो मालया राशिस्तारातिथिर्योगो वार कर्णमोषकम लग्न मोहरा कालचक्रम मेरु सप्तर्षयो ध्रुवा राहुर्मंद कविर्जीव बुध मश्य शिरवी काल सृष्टी स्थिती विश्वम जमुवम चैत पूरा पुग्नि मरुद्योमा कृती प्रकृती ब्रह्मा विष्णू शिव रुद्र ईश शक्ती सदाशिवा त्रिदोषा पितर सिद्ध्या यक्षा रक्षांसु किन्नरा साध्या विद्याधरा भूता मनुष्या पशव खगा समुद्रा सरित शैला भूतं भव्यमोद्भवा सांख्यं पातंजलम योग पुराणानि श्रुती स्मृती वेदांगानि सदाचारो मीमांसा न्याय विस्तरा आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्वं कामनाटकं वैखानसं भागवतं सात्विकं पांचरात्रिकं शैवशुक्तं कालामुखं भैरवशासनं शाक्तं वैनायकं सौरं जैनमारत संहिता सदसद्व्यक्तम् अव्यक्तं सचेतनमचेतनं बंधो मोक्ष सुखं भोगो योग सत्यमनुर्मा स्वस्ति होम फट स्वाहा श्रव षट पोषट प्रसन्नमा ज्ञानं विज्ञानम् आनंदो बोध समिचयो मया बोध समिचमो यमः एक एकाक्षराधार एकाक्षर परायणा एकाग्र धीरे कबीर एकानेक स्वरूप द्विरूपोऽध्यक्षो दुरुदो द्वीपरक्षकः द्वयमातुरो द्योधनो द्वन्द्वातीतो द्वयातिगः त्रिधा मातृकः श्रेता तिरोधकफलदायकः त्रिगुणात्मा त्रिलोकाधीश त्रिशक्ति शस्त्रलोचना चतुर्बाहुश्चतुर्दन्तश्चतुरात्मा चतुर्मुखः चतुर्विधोपायमयश्चतुर्वर्णाश्रमाश्रया चतुर्विधव च वृत्ती परिवृत्ती प्रवर्तका शशी आत्ते आता सुखदाला म्हणू दे आता. हा हो सर. चतुर्थी पूजन प्रीतश्चतुर्थी तिथी संभवः पंचाक्षरात्मा पंचात्मा पंचास्य पंचकृत्यकृत पंचाधार पंचवर्ण पंचाक्षर परायणः पंचताल पंचकर पंच प्रणव भावितः पंचब्रह्ममय स्फूर्ति पंचावरणवारितः पंचभक्ष प्रिय पंच बाण पंच शिवात्मकः षट्कोणपीठ षट्चक्र धामा षट्ग्रंथि भेदतः षडध्वान्त विध्वंसी षडङ्गुलमहारुदः षण्मुख भ्राता षट्शक्ति परिवारितः षट्वैवर्ग विध्वंसी षडुर्मी भयभञ्जनः षट्तर्कदूर षट्कर्म निरत षड्रसाश्रयः सप्तपाताल चरण सप्तद्वीपोरुमण्डलः सप्तस्वर्लोकमुकुटः सप्तीवरप्रदः सप्तांगराज्य सुखदः सप्तर्षि गणमण्डितः सप्तश्चन्दो निधि सप्तभूता सप्तस्वराश्रयः सप्ताब्धिकेरिकासार सप्तमातॄनिषेवितः सप्तश्चन्दो मोदमदः सप्तश्चन्दो मखप्रभुः अष्टमूर्तिर्ध्येयमूर्तिरष्टप्रकृतिकारणम् अष्टाङ्गयोगफलभुरष्टपत्राम्बुजासनः अष्टशक्तिसमृद्धः श्रीरष्टैश्वर्यप्रदायकः अष्टपीठोपपीठः श्रीरष्टमातृसमावृतः अष्टभैरव सेव्येष्ट वसुवन्द्योष्टमूर्तिभृत् अष्टचक्रस्फुरन्मूर्तिरष्टद्रव्यः विप्रियः नवनागासनाध्यासी नवनिध्यनुशासिता नवद्वारपुराधारो नवाधारनिकेतनः नवनारायणस्तुत्यो नवदुर्गानिषेवितः नवनाथ महानाथो नवनागविभूषणः नवरत्नविचित्राङ्गो नवशक्तिशिरोद्धृतः दशात्मको दशभुजो दशदिक्पतिवन्दितः दशाध्यायो दशप्राणो दशेन्द्रियनियामकः दशाक्षरमहामन्त्रो दशाशाव्यापविग्रहः एकादशाधिरुद्रैः सुत एकादशाक्षरः द्वादशो दण्डदोर्दण्डो द्वादशान्तनिकेतनः त्रयोदशाभिधा भिन्न विश्वे देवाधिदैवतम् चतुर्दशेन्द्रवरदश्चतुर्दश मनुप्रभुः चतुर्दशादिविद्याध्यश्चतुर्दश जगत्प्रभुः
साम पंचदश पंचदशे शीतांशु निर्मलः षोडशाधार निलय षोडश स्वर मातृकः षोडशान्तपदावास षोडशेन्दुकला कलात्मकः कला सप्तदशी सप्तदश सप्तदशाक्षरः अष्टादश द्वीपपतिरष्टादश पुराणकृत् अष्टादश औषधी सृष्टिरष्टादश विधिस्मृतः अष्टादश लिपिव्यष्टि समष्टि ज्ञानगोविदः एकविंश पुमानेकविंशत्यङ्गुलिपल्लवः चतुर्विंश चतुर्विंशति तत्त्वात्मा पञ्चविंशाख्यपूरुषः सप्तविंशति तारेश सप्तविंशति योगकृत् द्वात्रिंशत् भैरवाधीशश्चतुस्त्रिंशन्महारुदः षट्त्रिंशत् तत्त्वसम्भूतिरष्टात्रिंशत् कलातनुः नमदेकोनिपञ्चाशन् मरुद्वर्गनिरर्गलः पञ्चाशदक्षरश्रेणी पञ्चाशत् रुद्रविग्रह पञ्चाशत् विष्णुशक्तिश्च पञ्चषन्मातृकालयः द्विपञ्चाशत् वपुश्रेणी त्रिषष्ट्यक्षरसंश्रयः चतुष्षष्ट्यर्णनिर्णेता चतुष्षष्टिकलानिधिः चतुष्षष्टि महासिद्ध योगिनी वृन्दवन्दितः अष्टषष्टि महातीर्थ क्षेत्रभैरवभावनः चतुर्नवति मन्त्रात्मा षण्णवत्यधिकप्रभुः शतानन्द शतधृति शतपत्रायते क्षणः शतानिक शतमख शतधारावरायुधः सहस्रपत्रनिलय सहस्रफणभूषणः सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् सहस्रनाम संस्तुत्य बलापहः दशसाहस्रफणिभृत् फणिराजकृतासनः अष्टाशीतिसहस्राद्य महर्षि स्तोत्रयन्त्रितः लक्षाधीशप्रियाधारो लक्षाधार मनोमयः चतुर्लक्ष जपप्रीतश्चतुर्लक्ष प्रकाशितः चतुरशीतिलक्षाणां जीवानां देह संस्थितः कोटिसूर्यप्रतीकाश कोटिचन्द्रांशु निर्मलः शिवाभवादुष्टकोटि विनायक धुरन्धरः सप्तकोटि महामन्त्र मन्त्रितावयवद्युतिः त्रयस्त्रिंशत् कोटिसुर श्रेणी प्रणतपादुकः अनन्तनामानन्त श्रीरनन्तानन्त सौख्यदः ओम हा मी म्हणतो आता उत्तरन्यासम ओमस्य श्री महागणपती सहस्रनाम स्तोत्रमाला मंत्रस्य श्री महागणपतिर्षये नमः शिरसे अनुष्टोपछन्दसे नमः मुखे श्री महागणपति देवताये नमः हृदये हं बीजाय नमः गुह्ये हुं शक्तये नमः पादयोः स्वाहा कीलकाय नमः नाभो श्री महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे श्री गुरोराज्ञा श्री महागणपति सहस्रनाम स्तोत्रमाला मंत्रस्य श्री पूजामुतेन पाठान्ते न्यासे विनियोगाय नमः कृताञ्जलिः ओम गाम अंगुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः ओम गीं तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा ओम भूम मध्यमाभ्यां नमः शिखाय षट् ओम गैं नामिकाभ्यां नमः कवचाय हुं ओम गौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय षट् ओम गा करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फट् ध्यानं पंचवक्त्रो दशभुजो भालचन्द्रः शशिप्रभः उन्नमालः सर्पभूषो मुकुटाङ्गदभूषणः अग्निर्कशशिनो भावे स्थिरस्कुर्वन् दशायुधः मानसपूजा लं पृथिव्यात्मकं श्रीमहागणपतिदेवताय नमः गन्धं कल्पयामि नमः हम् आकाशात्मकं श्रीमहागणपतिदेवताय नमः पुष्पं कल्पयामि नमः यं वायवात्मकं श्रीमहागणपतिदेवताय नमः धूपं कल्पयामि नमः रं तेजसात्मकं श्रीमहागणपतिदेवताय नमः दीपं कल्पयामि नमः वम अमृतात्मकं श्रीमहागणपतिदेवताय नमः अमृतनैवेद्यं कल्पयामि नमः सं सर्वशक्तिप्रकृत्यात्मकं श्रीमहागणपतिदेवताय नमः सर्वोपचारान् राजोपचारान् दिव्योपचारान् कल्पयामि नमः श्रीमहागणपतिदेवताय नमः अनंतकोटि नमस्कारान् कल्पयामि नमः. आता आपलं पूर्वपीठिका आधी झाली, मग मूळ सहस्रनाम झालं मुख्य, आणि आता त्याची उत्तरपीठिका म्हणजे फलश्रुती आता सुरू होते. आपली वेळ बहुतेक संपत आली आता, तर एखाद्या अर्धवटच होईल आपली. तुम्ही नंतर ते पुस्तक तुम्हाला मी दिलेलं आहे ग्रुपमध्ये, तुम्ही पूर्ण करून वाचू शकता ते पुढचं. इति वैनायकम, याच्यात सगळं फलश्रुती म्हणजे हे वाचल्याने काय फळ मिळतं वगैरे असं आहे त्याचं.
इति वैनायकं नाम्नां सहस्रमिदमीरितम् इदं ब्राह्मे मूर्ते यः पठति परत्यन्नरः करस्थं तस्य सकलो महिकामुष्मिकं सुखम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं धैर्यं शौर्यं बलं यशः मेधा प्रज्ञा धृतिः कान्तिः सौभाग्यमतिरूपिता सत्यं दया क्षमा शान्तिर्दाक्षिण्यं धर्मशालिता जगत्संयमनं विश्व संवादो वादपाटवं सभापाण्डित्यमौदार्यं गाम्भीर्यं ब्रह्मवर्चसम् औन्नत्यं च कुलं शीलं प्रतापो वीर्यमार्यता ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं स्थैर्यं विश्वातिशायिता धनधान्याभिवृद्धिश्च सकृदस्य जपात् भवेत् वश्यं चतुर्विधं नृणां जपादस्य प्रजायते राज्ञो राज्यकलत्रस्य राजपुत्रस्य मन्त्रिणः जप्यते अस्य वश्यार्थं सदा सस्तस्य जायते धर्मार्थकाममोक्षाणाम् अनायासेन साधनं शाकिनी डाकिनी रक्षो यक्षो रगभयापहं साम्राज्यसुखदं चैव समस्तरिपुमर्दनं समस्तकलध्वंसी दग्धबीजप्ररोहणं दुःस्वप्ननाशनं क्रुद्ध स्वामी चित्तप्रसादनं षट्कर्माष्टमा सिद्धित्रिकालज्ञानसाधनं